In strategic management, this topic is strategic choices. Under strategic choices, we have discussed a lot. Now, this is MCQ. So, MCQ with answer. First your, then we'll do. First. Now, understanding the question and simultaneously some discussion and what should be the answer. MCQ 1. Which strategy is implemented of? After. Which strategy implemented after the failure of turnaround strategy? So, we have discussed turnaround strategy. A. Expansion strategy. B. Diversification strategy. C. Divestment strategy. 4. Growth strategy. So, turn around strategy, actually what happens when we are trying to come out from the business, turnaround strategy. So after decision taken, what we will do? Expansion, diversification, divestment or growth. Divestment. So after decision taken, come out, we will sell out the properties, recover the money. So correct answer is C. Okay, correct answer is C. So C will be the right answer. Okay. Next. 2. Retrenchment strategy in the organization can be explained as. Retrenchment means actually what we do. Worker we do retrench. Okay. A. Reducing trenches, that is gaps created between individual. B. Divesting a major product line or market. C. Removal of employees from job through the process of reorganization. D. Removal of employees from job in the business to relocate them in other business. So correct answer will be A, B, C or D. Which one? B. Divesting a major product line or market. Now our answer should be in the line of point 2. Retrenchment strategy. Retrenchment means we are doing employees out. Okay. So first thing, whether we want to create a gap between individuals, major, divesting major product line or market. तो एम्प्लॉइज लोग को निकाल बाहर कर रहे हैं हम लोग, या हटा रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ डिसीजन हम लोग का हुआ है जिसमें एक लाइन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है. मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट. बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है. ठीक है ना. रिमूवल ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. तो सी इज ऑल्सो नॉट सो रॉन्ग. ठीक है ना. आप 4 लाइन है, एक प्रोडक्ट लाइन माइनस कर रहे हो और ये भी एक पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ही है. ठीक है ना. तो बट बी इज मोर करेक्ट. तो आंसर इज बी. थर्ड, an organization diversifies in backward sequence in the product chain and enters specific product or process to be used in existing products. फिर से, an organization diversifies in backward sequence.
जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, इन द प्रोडक्ट चेन, एंड इंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस टू बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ उसका लिंक है। तो इट इज फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, reactive diversification. vertical, So now backward or forward, backward or forward, ठीक है ना, दोनों ही पुराना माने बैक को लिए या आगे को लिए, तो लाइन तो सेम ही रहा, ठीक है ना। तो बेस्ट आंसर विल बी बी, दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल में फॉरवर्ड भी आता है, बैकवर्ड भी आता है, ठीक है। अगेन 4, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंक्लूड, corporate strategy include, corporate strategy means big word, okay, expansion and growth, diversification, takeovers and mergers. B, vertical and horizontal integration, new investment and divestment areas. C, determination of the business lines. 3 दिया, उसके बाद from the combination given below, so from the combination given below select a correct alternative. First and 2 correct, 1 and 3 correct, 2 and 3 correct, 1, 2 and 3 is correct. तो इसके अंदर में क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज आई सेड इज अ बिग वर्ड, बिग कवरेज इज देयर। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कुछ भी ले सकता है, एक्सपेंशन ग्रोथ सही है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, टेक ओवर हो सकता है, मर्जर हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंटीग्रेशन, न्यू इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, और साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस लाइन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऑल करेक्ट आंसर विल बी डी। Fifth, vertical integration may be beneficial when A, lower transaction costs are improved, coordination are vital and achievable through vertical integration, flexibility is reduced, providing a more stationary position in the competitive environment, various segregated specialization will be combined, the minimum efficient scales of 2 corporations are different. Vertical integration beneficial, ठीक है। इंटीग्रेशन का मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को इफेक्टिव बनाना, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन अपने कंट्रोल में आ जाएगा, वाइटल, ए अनडाउट, ए इज राइट। 6, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ, स्टेबिलिटी SBU लेवल, corporate level, business level, functional level. Now, stability strategy. So, as per discussion, detailed discussion we have discussed in corporate level, the main objective is stability. ठीक है। Corporate target is stability, but in business actually permanent stability is never there. But then also object should be stability. Stability means existing business going on without any disturbance, without any competition. Okay. Corporate level. 7,
Conglomerate diversification is another name for which of the following: related diversification, unrelated diversification, portfolio diversification, acquisition diversification. Unrelated. Conglomerate, different business, say Tata Salt, Tata Motors, TCS, ठीक है ना, ये सब अनरिलेटेड है, तो दिस विल फॉल अंडर कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है. तो आंसर इज बी, अनरिलेटेड. 8. Diversification primarily helps to reduce competition, reduce risk, reduce taxes, reduce cost. Risk reduce. So diversification, this better one we can understand from the word portfolio. In our portfolio, if number of items are there, okay, in investment area also, so what big point is our risk will be reduced. Deviation less, risk is less. So B. If suppliers are unreliable, interesting है, suppliers are too costly, और जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट हम लोग का बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है. Which of these strategies may be appropriate? Backward integration. Horizontal integration, backward integration, market penetration, forward integration. Backward integration. तो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन का मतलब पैरेलल किसी के साथ में कुछ करना. बैकवर्ड मैंने, तो बैकवर्ड में क्या है, सप्लायर अपने बैक में है, अगर वो हम लोग ले ले अपने कंट्रोल में, तो सप्लायर वाला अपने हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना. तो मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट में सस्ता में माल बेचे तब तो और केस खराब हो जाएगा. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो सप्लायर इज बैक. Backward integration. Okay, so answer will be so MCQ related questions with strategic choices. Question varieties are two. One is subjective and one is objective. So should be ready for subjective also. Objective will be helpful in achieving minimum marks, but subjective will give you extra marks. Okay. Now, so our next topic is, write down strategy implementation. And evaluation. Strategy implementation and this topic, interesting topic, strategic management. What happens? Full concept is there. Management object is finally achieving the target. Object. We use the word mission, vision, values, but plain and simple word, finally strategic management main object is whatever you do, finally result. And what is result? Profit. Ultimate is profit. If you achieve the target is profit. Whatever way, you have to make a strategy. We say successful.
did everything, but finally profit is not there, then we can't say that decision is right. Now, government strategy is different thing. NGO strategy is different thing. But when you come to business, then business strategic management object is ultimately profit. So strategy, you make a strategy, plan, program, analysis, choices, what to do, how to do, for whom to do, apply full economics, whatever idea, knowledge, full implementation. But finally, ultimate is what is the result. So giving speeches, dialogues, making plans are easy, simple. But when you achieve result, then only you will be given back. Okay? So in this regard, write down one person named Peter Drucker. Has said effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes. Not attributes. ठीक है, इसको कैसे हम लोग को ध्यान में रखना है? बेस्ट एग्जांपल है, आपको इलेक्शन सब होता है, सभी अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाता है. फाइनली वी गिव क्रेडिट टू देम, दोज हु फाइनली अचीव. Whatever, question is not right or wrong. In business also, right, wrong, ethics are separate things. Finally achieved. Finally achieved. Then only you will be given credit. So Peter Drucker is saying, effective leadership is not about making speeches or being like, अच्छा है, ये है, वो है. Leadership is defined by results, not attributes. Means variables, ये वो बोला कोई मीनिंग नहीं. फाइनली रिजल्ट आया. रिजल्ट आया, आपका हर स्ट्रेटेजी को अच्छा बोला जाएगा. रिजल्ट नहीं आया, आपका स्ट्रेटेजी को अच्छा नहीं बोला जाएगा. ठीक है. So this was given by Peter Drucker. One more person, John Maxwell. A leader is one who knows the way. Goes the way and shows the way. ये एकदम और स्ट्रेट कट बोल दिया. लीडर कौन है? जिसको मालूम है उस रास्ता में वो चलता है और सबको दिखा भी देता है. So knows the way, goes the way, shows the way. Clear? This was given by John Maxwell. ठीक है. Now
again. So strategy, implementation and evaluation. इसका मतलब क्या है? आप स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद आफ्टर सम टाइम गैप आपको देखना होगा कि आपका स्ट्रैटेजी ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होने के बाद फाइनली आपको देखना होगा कि वेदर व्हाट वी थॉट, व्हाट वी डिड एंड रिजल्ट्स आर एज पर आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू डू इवैल्यूएशन। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते रहना होगा, इम्प्लीमेंट करते रहना होगा एंड इवैल्यूएशन करना होगा। मे बी सम मिस्टेक्स एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, so in this what we see, strategy, implementation, evaluation is revolving around 6 points. ठीक है, write down. Interrelation between strategy, formulation and implementation. Strategic change through digital transformation. Organizational structure, hard and culture shock. Fourth, strategic leadership. Fifth, strategic control. Sixth, strategic performance measures. ठीक है, now in brief, interrelationship between strategic formulation and implementation. पहले तो बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। अगर यह कनेक्शन सही नहीं है, पर्पस विल नॉट सॉल्व। Strategic change through digital transformation. Nowadays you can't avoid digital transformation. It is a must for the business, otherwise you will be outdated. Organizational structure, some area hard and some area soft. Culture is soft, but rules regulations should be hard. Strategic leadership, each area you have to appoint someone who will take care ahead. Strategic control, total battery automated, so control should be there. And strategic performance measure, finally you have to do the measure. Okay, so it is revolving around these 6 in brief. Okay,